position, fifth position. So this A comes and forms bond over here, and once it forms the bond, then this DMT at the 5' end is removed, and the process keeps on continuing till the whole oligo is synthesized on the surface. So this is just a overview of how the synthesis takes place. Now, as we have already told you, कि solid support is there, and the solid support, on this solid support, oligo are synthesized from the 3' end. Okay. And the first monomer at this end is normally attached to CpG. And you can see that कि यहाँ पर synthesis कहाँ शुरू हो रही है? Synthesis शुरू 3' end में हो रही है, और the first monomer is attached to the silica bead. Okay, or whatever solid support is there. The elongation will take place at the 5' end. Okay, it could be either controlled porous glass, it could be polystyrene, it could be any material. Okay, so these are some of the details related to the control pore glass and the polystyrene. I am not going into detail. Okay, now coming to oligonucleotide synthesis. The method for oligonucleotide synthesis was put forward by McBride and Caruthers in 1983, and this is called as phosphoramidite synthetic method. Okay, this is called as phosphoramidite synthetic method. अब इसको phosphoramidite synthetic method क्यों कहते हैं, that we will be discussing. Okay, again before I go forward, अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि ओलिगोन्यूक्लियोटाइड सिंथेसाइज करने के लिए हमें क्या चाहिए, न्यूक्लियोटाइड्स या न्यूक्लियोसाइड्स. ओके, हर एक न्यूक्लियोसाइड्स में बहुत सारे ग्रुप होते हैं. NH ग्रुप, अमोनिया ग्रुप होता है, OH ग्रुप होते हैं. But while synthesizing the oligo chain or oligo sequence, we do not want side reactions. So in order to prevent those side reactions, certain protecting groups are added before the oligonucleotides can be synthesized. ठीक है? Second thing that I have told you is that for oligonucleotide synthesis, a solid surface is required, a solid phase synthesis होता है, in which we need a solid surface जिसके 3' end पे, okay, the nucleotide attaches to that solid surface at the 3' end. So synthesis begins at the 3' end, through which it comes in contact with the solid surface. Now I am telling you the third thing is that the method by which oligonucleotide is synthesized is called as phosphoramidite synthetic method, which was given by McBride and Caruthers in 1983. Okay, I'm not going into too much of details, but just to let you know, यहाँ पर क्या हो रहा है, न्यूक्लियोसाइड 3' फॉस्फोरेमिडाइट बन रहा है. अब ये क्या है, ठीक है? In this process, जहां जो हमारे न्यूक्लियोसाइड्स हैं, we had started with the nucleosides, they are converted into 3-phosphoramidite. किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? 3-phosphoramidite. ठीक है? अब now what are phosphoramidites? Phosphoramidites are compound with, what are phosphoramidites? These are compounds with phosphorus alkyl amyl bonds. ठीक है, कि phosphorus के साथ कोई alkyl ग्रुप जुड़ा है और साथ में amide अमीनो ग्रुप भी है, अमाइन बॉन्ड से. ये जहां पर भी phosphorus alkyl अमाइन ग्रुप होगा, उस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? That bond is called as, those molecules are called as phosphoramidites. Okay, yeah, phosphoramitides. Phosphor is for phosphorus, Me is for amino or amine groups. Okay, now why Bcage ने डिस्कस किया था, he discovered कि the compounds with
p-alkyl amine bonds, that is phosphoramidites, these are stable and easy to handle until activated. मतलब इनसे काम करना आसान है, ठीक है. Now another important part is that कि phosphorus जो है it can exist in two oxidation states, ये सबको पता है. A 3p3 oxidation state जिसको हम phosphite कहते हैं, and a more reactive p5 oxidation state. Okay, but scientists what they found is that apart from between the two states of the phosphorus, that is p3 and p5, the p3 is more stable and less reactive. It is phosphite state, and as a result it is easy to handle. Okay, so the point, अब क्वेश्चन ये राइज आप मेरे से पूछ सकते हैं मैडम इतनी देर से हम लोग फॉस्फाइट क्यों डिस्कस कर रहे हैं. बेटा हम फॉस्फाइट इसलिए डिस्कस कर रहे हैं या फॉस्फो एमिटाइड इसलिए डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज जो डीएनए या आरएनए या न्यूक्लियोटाइड्स या ऑलिगोज होते हैं आपस में उसमें साथ में क्या जुड़ता है, देयर आर फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स. ओके, नाउ अगर आप इस पूरे प्रोसेस में देखें, दिस इज आवर न्यूक्लियोसाइड. Okay, having a protecting group attached to it at the 5th carbon, and you have this OH at the 4th carbon, and this is the OH group which actually forms the phosphodiester bond during the formation of DNA, either during DNA synthesis or during oligosynthesis. Okay, तो यहां पर क्या किया है कि सबसे पहले जो ये this phosphorus and then it is converted into this nucleoside is converted into 3-phosphoramidite. मतलब थर्ड पोजीशन पे, सॉरी नॉट फोर्थ पोजीशन, थर्ड पोजीशन पे, फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पे जो OH है उसको कन्वर्ट कर दिया, उसके साथ फॉस्फोरस ग्रुप लगा दिया और साथ में लगा दिया एक एल्काइल ग्रुप, converting it into phosphoalkyl amine bond, that means 3-phosphoamidite. Okay, जब ये बन गया, what happens next is that whenever, अब ये inactive form में है. Okay, so whenever there is activation with weak acid, okay, अब वीक एसिड से जब भी इसके यहाँ पर वीक एसिड लगा दिया जाएगा, व्हाट विल हैपन, दिस विल कन्वर्ट, वन विल गेट कन्वर्टेड इनटू 2, एंड व्हाट इज 2? ओके, दिस विल बी जनरेटेड विद इन द रिएक्शन. ओके, नाउ दिस 2 विल अगेन रिएक्ट टू फॉर्म न्यू फॉस्फाइड लिंकेज 3. ये एक और लिंकेज बना देता है, आपस में दो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ देता है. कैन यू सी हियर कि यहाँ पर इसने क्या किया है, देयर इज वन न्यूक्लियोटाइड एंड देयर इज अनदर न्यूक्लियोटाइड एंड इट हैज जॉइंड द टू न्यूक्लियोटाइड. हाउएवर दिस बॉन्ड इज नॉट फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, दिस फॉर्म इज कॉल्ड एज द फॉस्फाइड लिंकेज, बिकॉज दिस होल प्रोसेस इज इन्वॉल्विंग दिस phosphoramidite. Therefore it is called as phosphoamidite method for oligosynthesis. अब ये यूज कहाँ होता है, दैट वी विल सी. ओके, सो ये आपने ध्यान में रखना है. So the process of oligonucleotide synthesis involves number of steps. The very first step is the deprotection step. Okay, the second step is the coupling reaction. The third step is the oxidation reaction, and the fourth step is the capping reaction. ठीक है, तो हम बता रहे हैं कि ओलिगोन्यूक्लियोटाइड, अब आप इमेज बनाइए कि ओलिगो का प्रोटेक्शन हो गई है, रिएक्टिव जगह पे प्रोटेक्टिंग ग्रुप लग चुके हैं, वी हैव आर ओलिगोज व्हिच आर रेडी फॉर व्हाट, फॉर सिंथेसिस. फॉर सिंथेसिस ऑफ व्हाट? फॉर सिंथेसिस ऑफ द ओलिगोज. सो सी व्हाट हैपेंस इज, द वेरी फर्स्ट स्टेप इज, अब जिसको प्रोटेक्ट किया था उसको डी प्रोटेक्ट करना है. क्या करना है बेटा? उसको हमने डी प्रोटेक्ट करना है. सो डी प्रोटेक्शन में क्या करते हैं कि
जो आपका DMT ग्रुप था या ट्राइटाइल ग्रुप था, ठीक है, मिथॉक्सी ट्राइटाइल ग्रुप था जो 5 प्राइम कार्बन पर अटैच था, उसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम उसको हटाएंगे, दिस वन, दिस नीड्स टू बी रिमूव्ड. ओके, नाउ हाउ इज दिस डन? This is done by putting trichloroacetic acid in the medium. जैसे ही एसिडिक मीडियम होता है, DMT यहां से चला जाता है and OH is resumed. Okay, so that is important. इसके अलावा हमने आपको क्या बताया है बेटा? इसके अलावा हमने आपको ये बताया है कि जो थर्ड पोजीशन पर OH ग्रुप है, ये वाला, this OH group has also been converted into phosphite or 3-phosphoamidite. Why? Because it is more stable. This 3-phosphoamidite is more stable as compared to the phosphodiester bond. ठीक है, तो आपने देखा सबसे पहले हुई इसकी the process of removal of DMT is called as deprotection and it has happened over here. Okay, once there is deprotection, let us assume that there is deprotection, तो क्या होगा? The next step is कैसे करें deprotection? By just changing the slight acidic medium in the presence of TCA or any other weak acid. ठीक है? The next step is coupling. अब coupling में क्या हो रहा है? अब हम यहां पर क्या ऐड कर रहे हैं कि एक phosphor amidite monomer is added in the presence of an activator such as tetrazole, a weak acid that attacks the coupling phosphoamidite nucleotide, forming a tetrazole phosphoamidite intermediate. This structure reacts with the hydroxyl group of the recipient and the 5 prime to 3 prime linkage is formed. ठीक है, सो बेसिकली क्या हो रहा है कि यहाँ पर कपलिंग रिएक्शन जो उसका नेक्स्ट स्टेप है, अब उसमें देखिए क्या है कि हमने कोई एक एक्टिवेटर